Hello everyone. Today we are going to solve LeetCode 1288 remove covered interval. This is today's LeetCode POTD. So question is like that: given an array interval where interval of I represent a range L of I and R of I, represent an interval inclusive L of I and exclusive R of I. Remove all the interval that covered by another interval in the list. Means basically we have to remove the overlapping interval, or basically the count of the overlapping interval. The interval a comma b is covered by the interval c comma d if and only if c is lesser than a and b is lesser than d. This is basically the definition of what is the overlapping or what is the interval, how the interval a comma b is covered by interval c comma d. So we have to return the number of remaining intervals. This is basically the number of non-overlapping intervals. So this question is about we have to remove all the non-overlapping interval and return the count of uh, we have to remove all the overlapping interval and return the count of non-overlapping intervals. So this is the first example of LeetCode. So basically example goes like the first interval is of 1 comma 4, second interval is of 3 comma 6, and third is of 2 comma 8. If we see the interval 3 comma 6 is covered by 2 comma 8, how? The starting of this interval is 3, it goes until 6. The starting of this interval is 2 and it goes until 8. So if we mark this two intervals on number line 2 comma 8 and 3 comma 6, so 3 comma 6 lie in between 2 comma 8. So this is a overlapping interval, so we will increase the count of the answer, and this is a overlapping interval, and this is how we will just count all the overlapping interval and reduce it with the size of the array. Okay. The constraint of the question is about 1000, so we can use brute force approach, and yeah, so basically we can solve it using simply sorting, because the uh, sequence of element doesn't matter in this question. So let's see how we can approach this question. This is a bit easy question. It is marked as medium, but it is a easy question if you are doing the LeetCode from intermediate level. Okay, so let's see how we can solve this one. So this is basically our question. This is the example number 1 of the LeetCode. Now what I have tell you that कि जैसे हमें इसको भी सॉल्व करना है तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स, नंबर ऑफ ओवरलैपिंग इंटरवल, सॉरी, ठीक है। सो ओवरलैपिंग इंटरवल फाइंड करने के लिए अभी देखो, सपोज ये वाला एग्जांपल है, तो इसमें अगर अपन इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो इट विल लुक लाइक 1 4 3 6 2 एंड 8। ओके, सो अभी इस पर हमें फाइंड करने में आसानी होगी क्योंकि ये ओवरलैपिंग इंटरवल कौन कौन से है। सपोज दिस इज 1 4, दिस इज 3 6 एंड 2 8। सो वी कैन क्लियरली सी दैट कि 2 एंड 8 के बीच में 3 एंड 6 आ रहा है। सो दिस इज ओवरलैपिंग इंटरवल, राइट। ये ओवरलैपिंग क्यों नहीं, देखो 1 और 4, 3 और 8 ये दोनों ओवरलैपिंग नहीं है, बिकॉज इसका स्टार्टिंग देखो, इसका एंड देखो, इसका स्टार्टिंग देखो, इसका स्टार्टिंग देखो, इसका एंड देखो, इट इज़ डिफरेंट, राइट। सो हमें ऐसा एलिमेंट फाइंड, ऐसे ओवरलैपिंग इंटरवल्स फाइंड करना है, राइट। सो बेसिकली सॉर्टिंग हम कैसे करेंगे, इसको नॉर्मल सॉर्टिंग किया। इफ़ सपोज मैं इसको एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। इफ़ सपोज वी हैव 1 4 1 2 1 5 एंड 2 3। तो सपोज ये हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है। सो इसमें अगर अपन इसको नॉर्मली सॉर्ट करें, मतलब नम्स डॉट बिगिन एंड नम्स डॉट एंड लगा के, ठीक है, तो हम मतलब क्या करेंगे, बस स्टार्टिंग एलिमेंट से सॉर्ट करेंगे ना। सो क्या होगा, ये 1 4 1 2, सॉरी 1 2 1 4, ठीक है, 1 5 एंड 2 3। सो अगर हम इसको देखें एंड इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करने जाए तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अभी कैसा है, ये 1 2 है, 1 4 है, 1 5 है एंड 2 3 है, ठीक है। तो अभी हमें अगर इसको देखना है कि कौन से ओवरलैपिंग है इसमें, तो 1 और 5 के बीच में सारे ओवरलैपिंग है। देखो 1 2 भी ओवरलैपिंग है, 1 3 भी, 1 4 भी है, ठीक है।
तो ये पूरे ओवरलैपिंग है इसके बीच में। सो अभी हम इसको लेकिन एग्जीक्यूट कैसे करें कि हमने इसको ऐसा सॉर्ट किया तो हमें ब्रूट फोर्स लगाना पड़ेगा। एक्चुअली ब्रूट फोर्स काम करेगा इस क्वेश्चन में, बट इफ़ वी हैव टू गो फॉर ऑप्टिमल तो हमें कुछ अच्छा सॉल्यूशन दिखना पड़ेगा थोड़ा, जो कि बिग ऑफ एंड लॉग एन में एक्चुअली कर सके, मतलब एक सॉर्टिंग एंड एक ट्रैवर्सल। ओके, सो हमने इसको कैसे सोचा है कि एंड अगर तुम एक्चुअली लॉजिकली भी सोचो, सो हम अगर ओवरलैपिंग इंटरवल फाइंड करना तो हम क्या करें, कैसे सॉर्ट करेंगे इसको कि उसका स्टार्टिंग एलिमेंट छोटे से छोटा हो एंड एंडिंग एलिमेंट बड़े से बड़ा हो। मतलब अभी देखो इसमें कस्टम सॉर्ट कैसे करेंगे हम इसको कि हम देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको छोटे से छोटा रखने का ट्राई करेंगे एंड सेकेंड एलिमेंट को बड़े से बड़ा रखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे छोटे से छोटा फर्स्ट एलिमेंट 1 ही है, बड़े से बड़ा 5 है। ठीक है, इसमें सेकेंड अगर इसको सॉर्ट करें तो 1 4 आएगा, देन 1 2 आएगा एंड देन 2 3 आएगा। सो अभी हम इसको अगर देखें तो इसमें हमको क्लियरली दिख रहा है कि 1,5, तो इसका हम अगर इसका एंड रखें मैक्स एंड तो ये 5 आएगा। ठीक है, 5 आएगा। अब हम इसको इसके साथ चेक करेंगे 1, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 है, 5 बड़ा है, मतलब 4 5, मतलब 4 इज़ लेसर देन इक्वल टू 5 है, मतलब 4 5 के अंदर आ रहा है। सो मीन्स दिस इज ओवरलैपिंग इंटरवल, सो हम आंसर प्लस प्लस कर देंगे। ओके, देन उसको इंक्रीमेंट इसको हम चेंज नहीं करेंगे बिकॉज 4 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5। ठीक है, देन नेक्स्ट इसको चेक करेंगे, सो इसमें भी आएगा कि 2 इज़ लेसर देन इक्वल टू 5, तो वापस से आंसर प्लस प्लस करेंगे। सो हम इसको ऐसे चेक करेंगे। सो कस्टम सॉर्टिंग में ऐसा करने वाले हम कि इफ़ ए ऑफ 0 इज इक्वल टू बी ऑफ 0, ठीक है, तो हम इसको एंडिंग एलिमेंट के साथ सॉर्ट करेंगे। इफ़ दिस इज द केस, हाँ, तो हम ए ऑफ 0 इज ग्रेटर देन बी ऑफ ए ऑफ 1 इज ग्रेटर देन बी ऑफ 1। इफ़ अदरवाइज वी विल जस्ट सॉर्ट अकॉर्डिंग टू हर छोटा वाला, मीन्स फर्स्ट छोटा एलिमेंट आएगा एंड देन बड़े एलिमेंट आएगा। ठीक है, सो इसको हम सॉर्ट करेंगे। सो अभी इसको हम अपने एग्जाम्पल के साथ ट्राई करते हैं जो लीड कोड का 1 4 3 6 एंड 2 8। ठीक है, सो इफ़ वी नाउ ट्राई टू सॉर्ट इट, तो कस्टम सॉर्ट अपना वाला, सो 1 4 ही आएगा, देन 2 8 आएगा एंड 3 6 आएगा। ठीक है, तभी हम जो मैक्स एंड वाला जो कॉन्सेप्ट लगा रहे थे हम इसमें कि फर्स्टली तो यही आएगा 4। ठीक है, तो 1,4 रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे तो हम इसको एंड वाले के साथ चेक करेंगे। सो 4 इज़ लेसर दैन इक्वल टू 8, 4 इज़ लेसर दैन 8, मतलब 4 8 के अंदर लाई करता है। ठीक है, और अगर इसको नंबर लाइन पे भी देखें हम तो 1 4 एंड 2 8 आएगा ना, तो 1 4 ये वाला है एंड 2 8 ये वाला है, मतलब ये दोनों ओवरलैपिंग नहीं है। ठीक है, ये ओवरलैपिंग नहीं है, मतलब हम एंड को चेंज करेंगे 8 के साथ एंड आंसर वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है 3 6, 3 6 मीन्स 3 यहाँ पे आएगा एंड 6 यहाँ पे आएगा, राइट। तो 3 एंड 6 2 एंड 8 के अंदर आ रहा है। एंड एक्चुअली अगर हम 6 को कंपेयर करें, 6 को कंपेयर करें किसके साथ, 8 के साथ, तो 6 8 के अंदर आ, मतलब हाँ 6 8 के अंदर आ रहा है। सो मतलब ये ओवरलैपिंग है। तो इसको इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, हम बस आंसर को इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो हमें आंसर मिल गया 1। ठीक है, अभी हम इसको नम्स डॉट लेंथ में एन माइनस आंसर करेंगे। एन मतलब कितना है 3, 3 माइनस आंसर इज़ 1 मीन्स 2। एंड एक्चुअली अगर हम वहाँ पे देखें आंसर तो आंसर 2 ही है। सो या दिस इज करेक्ट। सो हम इसको कस्टमली सॉर्ट करेंगे, हम कंपैरेटर लिखेंगे एक, या फिर लैम्बडा फंक्शन से भी कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, इट इज़ बेसिकली हाउ वी कैन सॉल्व और हाउ वी कैन अप्रोच दिस वन। ओके, एंड इफ़ अगर हमें सादा सॉर्ट करना है, फिर सादा ब्रूट फोर्स लगाना है, मीन्स वी कैन ऑल्सो चेक पेयर बाय पेयर, मीन्स 1,4 3,6 एंड 2,8 है ना। तो हम इसको इसको इसके साथ चेक करेंगे, फिर इसको इसके साथ चेक करेंगे, फिर इसको इसके साथ चेक करेंगे, मीन्स दैट इज ब्रूट फोर्स, कंप्लीटली ब्रूट फोर्स बिग ऑफ एन स्क्वायर। ओके, हम जो ये वाला लगा रहे हैं ये हो गया बिग ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, log n for sorting and n for traversal. Okay, so now let's see how we can code this up, and it will be more clear if we code this up, right? So let's see. So now let's see how we can code this up. So basically हमने बोला है कि हम sorting से करेंगे custom sort. Okay, so let's see. Intervals dot slash, first define the length of the array, then answer,
Okay. Then the main thing, sorting. So interval stop begin, interval start end. Okay. So अगर आप CPP यूजर हो मीन्स if you are coding in CPP, so you can write a lambda function or a custom comparator. So basically मैं दोनों से करके दिखा देता हूँ. So comparator like we have a comparator and we have to declare here a comparator that is static boolean comparator of A and of B. Uh, and if A of 0 is equal to B of 0, then return A of 1 is greater than B of 1. Means this will sort in decreasing order. Decreasing order. Otherwise, A of 1, sorry, A of 1, not A of 0 is lesser than B of 0. Okay. Okay. So this is a custom sort. Or if this is like comparator sort, if we have to sort it with the lambda function, so वो भी करके दिखा देता हूँ. So if sort it with the lambda function, lambda function is basically an anonymous function that we can declare inside our same function. Okay. So let's see how we can do it. We can interval stop and lambda one. So auto A, auto B. Okay. And here we write our sorting logic. Same logic is of 0, a of 0 is equal to b of 0, so we will return a of 1 is greater than b of 1, and otherwise a of 0 b of 0. Okay, so this is how. And now we will write our and max logic. And max is basically first we'll declare it as 0, then traverse on the intervals is 0 is less than an I plus plus. Okay, so now I0 is less than I plus plus. Okay, so now we will write our end max logic. So it is like if intervals means this second one, intervals of I of 1 is lesser than equal to max. The max means it lies before the ending of the first interval. So it is like answer plus plus means there is an overlapping interval, and we will update it with new one, the max and intervals of I1. Okay, and return n minus answer. Okay. Oh, sorry, just wait a sec. Okay, now we will try to run it. Okay, all the sample test cases are good. Try to submit it. Let's see. Yeah, we are able to pass all the test cases. And so according to what I have explained you, the time complexity is big of n log n. Let's see what the code editor says. See, it is n log n. So this is how we will solve today's LeetCode POTD, remove covered intervals. It is a simple logic. Just know how to sort it and how to write a custom sorting. It is all about it. Okay. So thank you for watching.